Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I am Nida, your educator, and today we are going to do the last questions of government budget. Okay, chapter number 10, and this is the questions that were left. Okay, and this is CBSE 2020, right? You can take the screenshot. 9 and 10 only. These are left. Okay, and want more solved numericals like this? Hit the subscribe button and keep learning with me. Okay, and for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now because there are so many chapters left. Again, we have just completed 5 chapters, almost 4 chapters national income के आपके थे और एक और मैंने ये complete कराया है budget. तो 5 chapters we have completed, but it's still aggregate demand, multiplier, money and banking. These are all left. Okay, so we will continue with the practical questions also with it. So subscribe my channel for getting the notifications and all. Okay. So now I'm going to just solve the question. So okay. In question number 9, it states just wait, let me write the details here. Question number 9. Okay. The highlighter was selected. Okay. So question number 9, government budget. Sandeep Garg. Okay. So here it states first you need to calculate revenue deficit and then fiscal deficit. Okay. So what the information they have given: tax revenue, revenue expenditure, non-tax revenue, recovery of loans, capital expenditure, disinvestment, and interest payment. So we know the formula here, that is revenue deficit is equals to only the revenue expenditure will be taken into consideration minus revenue receipts. Okay, and revenue receipts में क्या होता है? Non-tax tax revenue and non-tax revenue. Okay, revenue receipts में ये होता है आपका non-tax revenue plus tax revenue, right? So what it's given in the question, पहले हम देख लेते हैं आपके टैक्स रेवेन्यू कितने हैं. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स equals to tax revenue plus non-tax revenue. So you will get here tax revenue is 1200 plus non-tax revenue is 2000. So you will get 3200 is revenue receipts, and revenue expenditure is already given. So put the values 3700 minus 4200. You will get 500. Mention always rupees in crores या thousand जो भी होगा वो. So this is your revenue deficit. This is the answer. Now next fiscal deficit का क्या formula होता है? Fiscal deficit we know that is equals to total expenditure minus total receipts, excludes borrowing. Okay, now let's find out what is given. Total expenditure का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Total
एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका गिवन है 3700 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है आपका 500। ओके, सो हियर यू हैव 3700 प्लस 500 4200। ये आपका कैलकुलेट होकर आगे टोटल एक्सपेंडिचर। ना टोटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है आपका? दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपका तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, 3200 है। ठीक है, प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स में आपका आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स में कितना आएगा? रिकवरी ऑफ लोन्स। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो यू विल गेट हाउ मच? दैट इज 145 प्लस 120। 145 plus 120, you will get 265. Put all the values. That is, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था? टोटल 4200। ओके, रिसिप्ट्स कितनी है? 3200 प्लस 3465। 4200 minus 3465, you will get 735 rupees crores. Please take the screenshot. आपको बस क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर में इसकी वैल्यूज गिवन है तो हमने ऐड करके लिख दिया, और टोटल जो रिसिप्ट्स हैं आपकी उसमें आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होंगी और कैपिटल रिसिप्ट्स, जो आप उसको अलग से यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी ये है, राइट? दिस इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स। मैंने CR लिख दिया है, ओके, शॉर्ट में। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ next what we are going to do, question number 10, last question of this chapter, unsolved. On the basis of the given information, calculate the value of fiscal deficit. Now you need to find out fiscal deficit, and the next is primary deficit. Okay, please pause the video and try to do the question by yourself. We have already the question and the answer also. Try it and tell me in the comment section, do you get the answer or not? Now here you have the formula for fiscal deficit is equals to total expenditure minus total receipts excludes borrowing. Right? But here, when we see the question, capital expenditure, total receipts, revenue deficit, interest payment, non-debt creating capital, ये सब given है, ठीक है? तो fiscal deficit आप कैसे निकालेंगे, right? तो हम पहले ये कर सकते हैं, और ये भी आपका फॉर्मूला आ सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, यहाँ पे यही सब चीजें गिवन है आपको।
तो आप फॉर्मूला में प्लेस कर दो। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज 20, ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 30। कि हम रेवेन्यू डेफिसिट तो इसी तरह निकालते ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो हम इसको इसी तरह निकाल लेंगे अभी। माइनस अब कैपिटल रिसिप्ट्स कितना बोला है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इज 5% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कितनी है यहाँ पे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी गिवन है क्वेश्चन में 20। ओके, और बोल रहे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में नॉन डेट क्रिएटिंग 50% है इसका। तो इसका 50% कितना हुआ, दैट इज 10। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग हो गया, -10। ठीक है, तो कितना आएगा, 20, और ये प्लस था, और ये फिर 20 हो गया, राइट। 30 माइनस 10, 20, 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40। तो रुपीज 40 क्या है, करोड़ में है, यस, इन करोड़। सो दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट, इट इज 40 करोड़। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, बी में, you need to find out primary deficit, and primary deficit is equals to, sorry, fiscal deficit होता है यहाँ पे, fiscal deficit तो हमने अब कैलकुलेट कर ही लिया है, राइट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, सो फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका, 40 करोड़, दिस इज यू हैव कैलकुलेटेड, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है ऑलरेडी 10 रुपीज 30 crores is your primary deficit. With this, we come to the end of the numericals, the summaries and theories and explanations of government budget chapter, chapter number 10. Hope the students who have requested उनको समझ में आया होगा चैप्टर, अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, जो मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे, और एक थोड़ा आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला भी पोर्शन रह गया है नेशनल इनकम में। आई ट्राई टू कंप्लीट दैट आल्सो बिकॉज यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स ऑन दैट आल्सो, ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो just stay with this, okay, and keep practicing, keep learning, keep growing, get good marks, and tell me in the comment section how you like the video. Okay, thank you so much.